yt क्या होएगा अभी? एक्सपेक्टेड वैल्यू yt इसमें yt है ना, एक्सपेक्टेड सब ईटीज का 0 हो गया, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू yt क्या होगा? अल्फा अपॉन 1/5, अल्फा अपॉन 1 minus 5, that will be the expected value of yt, which is constant. Yes. Because alpha is a constant, phi is a constant. But we already said the absolute value of phi is less than 1. If phi is equal to 1, then we have a problem. Then you don't have anything defined, right? But we said that's a problem anyway. If phi is equal to 1, then non-stationarity hota hai. Right? So for stationarity, phi is less than 1, alpha minus phi is a constant. The first condition is satisfied. Pardon? Yeah. See, expected value of yt is alpha upon 1 minus phi plus the expected value of all these et plus phi. That second last terms are all 0. So expected value of yt is alpha upon 1 minus phi, which is a constant. Right? If phi is equal to 1, obviously this is not defined, but then we'll have a random walk. And this is one non-stationarity hai, so there is not a constant. We have explicitly defined the absolute value of phi to be less than 1. So anything between minus 0.99999 to plus 0.9999 will do for us. Right? Okay, folks? Okay? So first condition for stationarity is satisfied. Second condition के बारे में आपको बताइए. Variance का क्या करें? Always a big problem is that variance का क्या? Variance क्या होता है? Variance of y क्या होगा? How will you define the variance of y? Expectation of y minus expectation y the whole square. आपके पास y है, expectation y, तो क्या बचा दोनों का? एक से दूसरे को घटाएंगे तो pt plus phi pt minus 1 वगैरह बचा है ना, right? So expected value of yt minus expected value of yt square, right? expected value yt ये हो गया, yt ये है, दोनों का फर्क ये बचा, ठीक है, which is equal to expected value of pt. तो ये सब चक्कर करने से अच्छा ये है, ये सबका वेरिएंस ले रहा है ना अपने, तो इसका वेरिएंस क्या है? सिग्मा स्क्वायर, तो ये हो गया सिग्मा. फाई et minus 1 का वेरिएंस क्या होगा? फाई स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, फाई स्क्वायर, फाई स्क्वायर et minus 1 का वेरिएंस क्या होगा? फाई क्यूब फाई स्क्वायर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, फाई फोर सिग्मा फाई लाइक फाई स्क्वायर स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, जो भी है यहाँ उसका स्क्वायर बन जाएगा ना, ठीक है. प्लस क्या होगा? 3 sigma square and so on and so on. Right? This calculation as sigma square plus phi square sigma square, phi square square sigma square plus phi square cube sigma square and so on. Phi cube square is nothing but the phi square cube. Right? Sure? So on and so forth. So now, if I take sigma square out here, right? If I take sigma square out here, what do I get? I get like that, right? So I have a geometric series in phi square. What will it converge to? If the geometric series in phi converges to 1 upon 1 minus phi, what will the geometric series in phi square converge to? Phi के बदले में phi square डालो ना. 1 upon 1 minus phi square. So this will be phi square, right? Okay. Sure. So this is also constant if the absolute value of phi is less than 1.
then absolute value of phi square is also less than 1. And so this term is defined and constanted on that. Right? The third part of the covariance being constant. So, अभी covariance के बारे में क्या करेंगे? YP minus 1. That's Sanjay will show you that. That is what it is. So Sanjay has to tell you what is covariance YP minus 1, YP minus 2, YP minus 3, and so on and so forth. Right? There are two terms, covariance and autocovariance. Sanjay has to tell you what is covariance, and Mayank has to tell you what is covariance, autocovariance. You know, so covariance, autocovariance, correlation, autocorrelation. Right, and they have to tell you what is the autocorrelation function. Right, they will tell you what is the autocorrelation function. Right, that's what we need to study for. Right, but let me give you some trial hints of what that is there. Right, so basically, now let me find out expectation YT and expectation YT. This is covariance at lag 1. There is covariance of YT and YT minus 1, that is lag 1. YT and YT minus 2 is lag 2. YT minus 3 is lag 3. Right? So covariance YT minus 1. अब वो कैलकुलेट करना कैसा करेंगे? तो इधर क्या आएगा? पहले देखो इसमें क्या आएगा? YT की वैल्यू इधर क्या आएगा? ऐसे कुछ बहुत बड़ा आएगा ना, और इधर क्या आएगा? सब एक पीरियड पीछे है ना, ऐसा सब आएगा, ठीक है? सबको एक पीरियड पीछे ढकल दिया ना, राइट? तो think of two trains which are standing head to head. आपको एक को एक कंपार्टमेंट पीछे ढकेल दिया, राइट? अच्छा, तो इसका फर्स्ट कंपार्टमेंट, उसका सेकंड कंपार्टमेंट हो गया, तो साइड, राइट? अभी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? इस EP से सबको मल्टीप्लाई करेंगे, EP का तो कोई टर्म नहीं है, so all those terms will be zero. EP minus 1 से जब करेंगे तो pi square EP minus 1 square आ जाएगा ना, so this will be expectation of five, right? Correct? 5 EP minus 1 square plus बाकी सब टर्म चले गए. फिर हमको 5 square EP minus 2 से करना है. 5 cube EP minus 2 square. और करेंगे तो क्या होगा? 5 4 EP minus 3. 5 बिकॉज अभी तो 5 स्क्वायर का टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 क्यूब से करेंगे ना, ये 5 क्यूब के टर्म में 5 क्यूब रहेगा और 5 स्क्वायर रहेगा, सो 5 5 raised to 5 5 raised to 5 ऐसे जाएगा ना, ठीक है? तो वैसे चलते जाएंगे, यू डोंट वरी अबाउट दैट, वो राइट, अनलेस यू हैव टू स्पेंड ऑल द टाइम. ये चक्कर समझ में आ गया ना? अभी 5 को मैं बाहर निकाल दूंगा, इसको मैं करूँ तो क्या होगा? ये 5 सिग्मा स्क्वायर, इसका वेरिएंस 5 स्क्वायर, इसका वेरिएंस 5 स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर आएगा. सॉरी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू, सॉरी ई स्क्वायर, तो वेरिएंस नहीं, ये सिर्फ 5 यही रहेगा बिकॉज़ एक्सपेक्टेशन ऑफ ई स्क्वायर, यू आर राइट. तो सिग्मा स्क्वायर, राइट, 5 सिग्मा स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा? sigma 5 क्यूब सिग्मा स्क्वायर plus 5 sigma square. 5 is to 5 sigma square plus some, right? It will keep on.
Now here if I take phi sigma, if I take phi sigma square out, if I take phi sigma square out,